people around the world should learn from India because नमस्कार, मैं प्रयासी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रयागराज के संगम की रेती पर इन दिनों आस्था, संस्कृति और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। माघ मेले में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक खास श्रद्धालु है लुक्रेशिया, जो इटली से भारत आई है और इन दिनों संगम तट पर भजन कीर्तन में लीन नजर आती है। लुक्रेशिया का कहना है कि भारत आकर उन्हें एक अलग ही सुकून मिला है। भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराएं और यहाँ के लोगों का अपनापन उन्हें अपने देश से कई ज्यादा करीब लगता है। लुक्रेशिया बताती हैं कि महाकुंभ और माघ मेले ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। देखिए प्रयागराज से हमारी संवाददाता अनम फातिमा की रिपोर्ट। माघ मेले में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, तो अलग अलग लोग जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। तो इस बार जो वायरल हैं ये इटली से आई हुई हैं। प्लीज टेल योर नेम। Hello, my name is Lucrezia. Nice to meet you. तो लुक्रेशिया आई हुई हैं, कहाँ से आई हैं और क्या करने यहाँ आई? Now I'll tell you in English. Yes. You have come here with what purpose? I came here for pure liberation because I came here last year for the Mahakumbh, the big, very big in Prayagraj, and I came back because it was the best experience of my life. It changed me forever. I was a really depressed person, really sad, overthink. Met Baba, told me about meditation, told me about the Sanati, It freed me from everything. I feel so free and so loved, really. तो इनका कहना है कि ये महाकुंभ में आई थी और महाकुंभ में आने के बाद इनका सब कुछ बदल गया। जिस तरीके से ये डिप्रेस थी चीज़ों को लेके, बट यहाँ आके सब कुछ जो है बदल गया। इस बार फिर से वो माघ मेले में आई हैं। डिड यू टेक द होली ट्रिप? आस्था की डुबकी लगाई? डिड यू टेक द होली ट्रिप? Yes, me and my dad did it. Yes, but very cold. It's cold. How does it feel after taking that? I feel pure, clean, like free from the evil, really. When I took the bath 3 times, I was free from all my problems. Really, best experience ever. And at first, I felt very cold, but afterwards, I felt hot, like nothing happened. So it's like magic. लेकिन इनका कहना है कि जो मैंने पूछा कि आस्था की डुबकी लगाई, आपने तो कहा आस्था की डुबकी लगाई, पहले तो ठंडा लगा बट उसके बाद बहुत ज़्यादा प्योर लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उसके बाद जैसे कुछ असर ही नहीं कर रहा था, सर्दी का ज़रा सा भी असर नहीं। What about the people over here? लोग यहाँ के कैसे लगे? What about the people? The people here are amazing, wonderful. Really, I came here just with my dad. I found a big family. Everybody here love everybody. There's a special unity. Everybody here is kind, amazing and spiritual. This is best people. Are in they the world. welcoming? Wow, no, so welcoming. No, so welcoming. They gave me food. They took me around. They showed me everything. You gave me peace. I feel like really so in debt to you because you've been the best gift I could ever receive. Like Indian people, you have to believe me, the best people in the world. I've traveled a lot. I've been to Japan, China, USA, Mexico, but Indian people, the best in the world. Also, we have a lot of Indian people in Italy, Punjabi, beautiful also Punjabi people. So India is great. India is the most magical place on earth. देखिए इनका कहना है कि यहाँ के लोग पूरे दुनिया के लोगों से सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। जिस तरीके से इनका भव्य स्वागत कर रहे हैं, इनको बुला रहे हैं, चाय नाश्ता करा रहे हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड हाउ डज इट फील्स दैट पीपल आर कमिंग एंड कवरिंग यू? आई कैन सी पीपल कमिंग, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, क्लिकिंग पिक्चर्स. हाउ डज इट फील्स? It feels so weird because I am not different from you. I'm just like you. And coming here, I feel very happy, but I wish that you can feel as me because I'm no different than you, no different, I'm just like you. But I'm very happy that you are welcoming me, and please, you are so welcome to Italy. Please, whenever you want to come, Italian people will always love you. Please, come. So have you learned any Hindi over here? Just Dhanyavad, which is, thank you. Then, namaste, which is hello. And then
Jai Shri Ram, which is Lord Rama, right? Yes. And then Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, and Sitaram, Sitaram, Sitaram. That's the only thing that I know. Some mantra. I have to study Hindi a lot because Hindi has a lot of dialects, right? So many dialects, yeah, so many. But it's a very beautiful language. The Sanskrit, very good. What message do you want to give to the rest of the world about India? People around the world should learn from India because I've never met someone so friendly, kind, welcoming, and everybody here is united. Everybody here is happy, and no matter the circumstances, everyone here is loved. So everyone in the world should learn from India because, like, for me, it was the best trip of my life. Really, I have no words to describe India because it's too beautiful. The people, the culture, the food also. The food, wow, samosa, beautiful. And really speechless. For me, if it was possible, I would love to stay in India forever, really. It's my favorite. One last question. Yes. What about the arrangements which has been done by the government? Yes, very good because like there's so many police officers, that helps us always helps us, always gives us direction. And then the traffic is not present. So difficult because crores of people coming down to this city, Of visiting course, the because city. This is a holy city. I know that. No, everyone should come here. No, I hope everyone should come. Like last year, had the Mahakumbh, 500 million people here, amazing, taking the holy bath. So this year, the organization is perfect. Really good. No, really enjoyed it. Me as a tourist, everyone helped me. Police officer helped me. The No management. more tourists. No more tourists. No, exactly. Yeah. Too many. Thank you for having me. Really speechless. And You are no more tourists for us now. You are Exact- part of India now. Wow! Don't make me cry. I'm so happy about that. And you are so welcome, not as a tourist, but as local and as a friend in Italy. Please. तो Thank you. देखिए आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से जो है इनको इंडिया लगा, इन्होंने जमकर जो है इंडिया की, भारत की जो तारीफ़ करी है, हम सुन सकते हैं यहाँ के लोगों की तारीफ़ करी है, जिस तरीके से लोग इनका स्वागत कर रहे हैं, इनके पास बैठ रहे हैं, और ख़ास तौर से जिस तरीके से अरेंजमेंट है उसकी तारीफ़ की। इनका ये भी कहना है कि पूरी दुनिया में भारत जैसे लोग नहीं हैं, और सबको इन्होंने यही संदेश दिया कि यहाँ ज़रूर आएँ और एक बार यहाँ ज़रूर आके घूम के जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनुफातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।